क्यों इंग्लिश ज़रूरी है हमारी लाइफ में सीखने के लिए? Why is it important to learn English? Do you know, by the way? You have no idea? Let me tell you. It is very important to learn English क्योंकि English is the common language which is being spoken widely everywhere. So I think अगर आपको इंटरव्यू स्किल्स करने हैं, ऑनलाइन ब्राउजिंग करनी है, इंटरनेट सर्फिंग करना है, and if you want to study about history, everything is in English. So आपको क्या करना है? इंग्लिश सीखना है. What is the best way to learn English? Is to speak English. So therefore, stay focused and learn as maximum as possible. जैसे कि मैंने बोला आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है. There are lot many reasons which I personally feel that would help you to gain confidence in English by practicing speaking English with your friends. There are many areas like business, science, maybe for research. You definitely might require an upgradation in your education. आपको बैचलर डिग्री करना होता है, मास्टर डिग्री करना होता है और उसके बाद PhD भी हो सकता है अगर in case if you are interested to. So in that case you do require to have a complete understanding of English and that's why English is important. इंटरव्यू करना है आपको, English is a need. To have a perfect impression, then English is a need. In order to have a confidence, you should learn English. अगर आपके पास confidence नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है, then आप English को नहीं बोल पाएंगे. So it is more important that you should learn all your lexical resources. क्या होते हैं lexical resources? आपकी difficult words, vocabulary को कैसे use करते हैं, ये सब इंग्लिश में आपको सीखना चाहिए. अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, then don't hesitate to connect with Magnum IELTS English Academy, where we are helping students from their scratch to the highest level. कभी कभी हमें मूवी देखना होता है और उसमें हम सोचते हैं कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो इंग्लिश में है, सब टाइटल्स इंग्लिश में रहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एक एक वर्ड का मतलब पता हो. और ये कैसे? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी तरफ से, you would never be able to learn English. So try to make English as your main language, then your mother tongue. Only then you will be able to learn with ease. बहुत आराम से आप बोल सकते हैं like a native English speaker. अगर आप daily at least 5 vocabulary words का यूज करें और उसको sentence formation बनाएं. All in all, I would say learning English is important for effective communication, for your overall development, that you can start thinking in English. अगर आप इंग्लिश में सोचेंगे तो आपको इंग्लिश आसानी से आएगी. आप मराठी बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं बहुत आसानी से, ऐसे ही आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं. The only thing आपको क्या करना है, that you have to start thinking in English. Now English would open up a worldwide doors for you so that you can connect with people abroad as well. यानी अगर आपको कनेक्ट करना है किसी भी कोने में, आप अगर इंग्लिश जानते हैं, you can easily be able to manage and communicate well. Well, that is it. And I would say these are certain reasons. Well, these are very impressive and compelling reasons that why you should learn English. I hope आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो then please do give us a call and speak to me directly and I will answer all your questions. Please do call on 882-882-0453.